Hey guys, welcome to our YouTube channel brought to you by sscexamtutor.com. In this tutorial, I am going to show you a shortcut trick that will help you to solve a math question which is asked almost every year in CGL exams. So let's get started. As you can see on your screen, these are a particular type of questions that are asked every year in SSC CGL exam. This particular type is again divided into two types. One that starts with reduction or decrease. For example, question 1, 2, 3. Okay, and another type that starts with hike or increase. For example, question 4, question number 5, and question number 6. In these questions, you are asked either to find the reduced price, as in question number 1, or the original price in question number 2 and 3. In question number 4, you are asked to find the increased price, and in 5, you are asked to find the original price. Okay. So let's see how to solve these questions using the shortcut trick. So here is our first question. It says a reduction of 10% in the price of rice enables a person to purchase 2 kg more for 18. Find the reduced and the original price per kg of rice. So let's see how to solve this question. So it says 2 kg more for 18. Okay. So the price of 1 kg will be 18 upon 2, that is 9. So when you are asked to find the reduced price, just consider this 10% and solve the question using it. Let's see how. So 9, that is the price of 1 kg, and 10% is equal to 10 upon 100, and just solve this and you will get 0.9 per kg. That's the answer of that's the answer when you are asked to find the reduced price. Okay, so what to do when you are asked to find the original price? Take this reduced price, where does this 90 come from? Let me explain. The question said a reduction of 10%, right? So let's consider you have 100 rupees and there is a reduction of 10% in it. So at the end you will be left with 90%. 90. Okay, so this is the 90. Okay, now solve this and you will get the original price, that is rupees 1 per kg. So it's very easy to solve, and apply these tactics when you are when the question starts with a reduction. Now let's see the second question, which starts with the hike. The method is very similar and you won't find any difficulty in understanding it, and you are asked to find the increased and the original price, right? So again start with the same tactics. It means find the increased price of 1 kg. So the price of 3 kg is 660. So price of 1 kg will be 660 upon 3, that is 220. And in first part you are asked to find the increased price. So sorry, it should be the increased price. It should be the increased price. So increased price is equal to this 220
and this 10 upon 100 and solve this, and you will get the increased price. And when you are asked to find the original price, you will have to take this value, that is the value of increased price, and where this is the we will have to use the increased price per kg. Okay, and where does this 110 came from? It's again from here. Let me explain. The question said 10% hike. So consider you have 100 rupees and you got a hike of 10%. So at the end you will have 110, right? So this is what I have used. So on solving this equation, on solving this, you will get rupees 20 per kg, that is the original price. Okay, so that's the shortcut part, and I don't think you will face any difficulty in solving any question related to this. So let's jump to the question which are asked in previous year SSC exams. So this is a question which was asked in previous year paper of SSC CGL. It says, if the price of rice is reduced by 20%, one can buy 2 kg more for 100. The reduced price of rice is. So you are asked to find the reduced price. So you will have to find the price of 1 kg. So 1 kg is equal to 100 upon 2, that is 50. So reduced price is equal to this 50 into 20 upon 100. Again, if you are not able to understand, I am considering this 20 here. Okay, and now solve it. It will hardly take 2 seconds, or you can solve it even without using pen and paper. So the answer is 10 per kg, that is B. Okay, another question which was asked in previous year SSC CGL exam, and in this question you are asked to find the original price. Okay, and it's a reduction. The question starts with reduction. So apply the same tactics. So you are getting 6 kg more for 240. So the price of 1 kg will be 240 upon 6, that is 40. So first of all you will have to find the reduced price. Okay, so reduced price is equal to 40 into 20 upon 100. Again I am using this 20. Okay, don't get confused, I am using this 20. So on solving you will get rupees 8 per kg. In order to find the original price, you will have to use the reduced price. Okay, so I have already shown this, but still explaining. So 8 into 100 upon 80. 8 is the reduced price, and 80 is because of this 20, and because the question says reduction of 20. So again, if you are not able to understand the concept, consider you have 100 rupees, and after a reduction of 20% in it, you will be left with 80. So this is the 80 I am using here. On solving you will get rupees 10 per kg, and that is the answer. It will again take just 2 and 3 seconds. Again a similar question, let's try to solve it a bit faster. So instead of writing the price of 3 kg is 120 and then the price of 1 kg will be 120 upon 3, you can simply calculate the 1 kg is equal to 120 upon 3, that is 40. So you are asked to find original price, right? So reduced price is equal to 40 into 20 upon 100. Again I am using this 20
in order to find original price you will have to use this reduced price. So this is what I have used, and why I have used 80. I think you should have understood this, because it says reduction of 20. So consider again, if you are not able to understand, consider you have 100 rupees and you got a reduction of 20%. So at the end you will have 80. This is the 80 I have used here. So on calculating further you will get rupees 10 per kg. That's the answer. Now this question starts with the hike. Okay, and I have already shown you the trick to solve the questions which starts with hike, but are still explaining. Okay, so you are asked to find the increased price in this question. So the price of 2 kg is 110, so price of 1 kg will be 55. So increased price, again it's written wrong, it should be increased price. Okay, so increased price is equal to this 55, and I am using this 10. Okay, on solving you will get 5.5 per kg. That is the answer. So it will hardly take 2 seconds, and you can solve it without using pen and paper. Another question in which you are asked to find the original price. The method is same. Okay, price of 2 kg is 110, so price of 1 kg will be 55, and in order to find the original price you will have to find the increased price in this case, because it says 10% hike. Okay, so increased price, again it's written wrong, it should be increased price. Okay, so increased price is equal to 55. This is the 55 I am using, and this is the 10 I am using here. So on solving you will get 5.5 per kg, that is the increased price. So in order to find the original price you will have to use this value. So original price is equal to 5.5 to 110. So why 110? Due to this 10% hike. Let me explain you. If you have 100 rupees at the beginning and you got a 10% hike, okay, so you will be left with 110 after that. So this is the 110 I have used. So on solving it you will get rupees 5 per kg, that is the answer. So that's the end of our tutorial. At the end we have provided you some practice question that you can practice. These questions are very similar and were already asked in SSC CGL exams and can be asked in future as well. So using this trick I hope you would be able to solve without using pen and paper, and would be able to save a lot of time in your exam. So if you are looking for the answer of this question, here it is. Okay, we want to upload shortcut tricks on all topics, but for that we need your support. You can support us by subscribing to our channel and sharing our videos with others, and of course you can request us to create videos on any particular topic if you want. So subscribe to our channel and share our videos with others. Have a great day. You can subscribe to our channel by clicking on this big subscribe button. So have a नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसे आपके लिए लेकर आता है SSCExamtutor.com। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक, जिसे यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर टाइप के मैथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि SSC CGL एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछा जाता है।
सो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो भी दो तरह के होते हैं। एक जो स्टार्ट होते हैं रिड्यूस्ड या रिडक्शन से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आप देख पा रहे हैं, और एक दूसरे होते हैं जो हाइक से स्टार्ट होते हैं या इंक्रीज से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो जहाँ पे जो जिसमें अगर ये बताया जाए कि किसी का प्राइस मतलब दाम है जो कम होने से एक कस्टमर कुछ किलो ज़्यादा ख़रीद पा रहा है, और एक दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें कहते हैं हम कि कुछ परसेंटेज प्राइस के बढ़ जाने के कारण कुछ केजी कम ख़रीद पा रहा है कस्टमर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी सॉल्व करें, ये आज हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि स्टार्ट होता है रिडक्शन से, उसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के ज़रिए, शॉर्टकट तरीके से। तो इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको कि बेसिकली दो चीज़ पूछे जाते हैं आपसे। या तो आपसे वो पूछेगा रिड्यूस्ड प्राइस, मीन्स अगर क्वेश्चन रिडक्शन से स्टार्ट है तो रिड्यूस्ड प्राइस पूछेगा, और एक ओरिजिनल प्राइस पूछेगा। ओके, तो देखते हैं दोनों चीज़ हम कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो कि ये दिया है 2 kg मोर फॉर 18। ओके, तो 2 kg का दाम 18 है, तो 1 kg का 9 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो जब भी आपको रिड्यूस प्राइस निकालना हो, तो ये पहले 1 kg का दाम निकालें, और उसके बाद ये 10 कहाँ से आया, 10 इंटू 100 हमने जो किया है वो 10 बेसिकली ये है जो कि दिया हुआ है आपका 10%। तो ये इतना सिंपल है। अब इसे सॉल्व करने पे 0.9 पर केजी आया, ये है आपका रिड्यूस्ड प्राइस। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछे तो आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा जाए तो आपको पहले रिड्यूस्ड प्राइस निकालना पड़ेगा और उसे यूज करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। तो ये था हमारा रिड्यूस्ड प्राइस, जो कि ये हमने यहाँ लिखा, और ये 90 कहाँ से आया ये मैं बताऊँगा आपको। यहाँ कह रहा है रिडक्शन ऑफ 10%। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं पहले से, उसमें से 10% घट जाता है या कोई मांग लेता है, तो आपके पास कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। तो यही 90 को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसे आप अगर पूरा सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा ₹1 पर केजी, जो कि आंसर है। तो इस तरीके से आप रिड्यूस्ड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं, कब, जब रिडक्शन से स्टार्ट हो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा जिसमें एक हाइक से स्टार्ट हो, मतलब हाइक का मतलब होता है दाम का बढ़ जाना। तो 10% दाम बढ़ जाने से कोई कस्टमर 3 किलो कम ख़रीद पा रहा है 660 रुपये में, तो आपको उसका बढ़ा हुआ दाम और ओरिजिनल दाम निकालना है। तो यहाँ पे भी मेथड सेम ही है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले 1 केजी का दाम निकाला, तो 3 केजी का दाम यहाँ 660 था, तो 1 केजी का दाम 660/3 दैट इज़ 220 हो जाएगा। और जब इंक्रीज प्राइस निकालना है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इंक्रीज प्राइस होना चाहिए था, इंक्रीज प्राइस होगा यहाँ पे। तो जब इंक्रीज प्राइस आपको निकालना हो तो ये 220 का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे, 220। और ये 10 कहाँ से आया, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ये 10% है जो कि दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। ओके, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो 22 पर केजी आएगा, जो कि इंक्रीज प्राइस है। तो जब आपसे इंक्रीज प्राइस पूछा जाए तो इतनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब जब ओरिजिनल प्राइस पूछा जाएगा तो आपको ये इंक्रीज प्राइस पहले निकालना होगा और ये यूज करना होगा ओरिजिनल प्राइस के लिए। तो देखिए क्या करना है, काफ़ी सिंपल है। ये 22 जो कि हमने यहाँ से निकाला, और 110 ये कहाँ से आया, एक्चुअली यही है 10% हाइक। मैं इसे समझाता हूँ अभी, देखिए आप। मान लिया कि आपके पास 100 रुपये हैं और 10% वृद्धि हो जाती है उसमें, 10% इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है आपके पास। तो लास्ट में आपके पास कितने
रुपये होंगे 110, क्योंकि 10% जो है 100 का वो 10 होता है, तो 100 + 10 110, ठीक है। तो यही 110 को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसे जब आप और सॉल्व करेंगे तो ₹20 पर केजी आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो काफ़ी आसान तरीका है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं SSC CGL एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है, और क्वेश्चन रिड्यूस से स्टार्ट हो रहा, मीन्स कह रहा है कि 20% प्राइस में कमी होने के कारण 2 केजी ज़्यादा ख़रीद पा रहे हैं हम 100 रुपये में। तो आपको रिड्यूस प्राइस निकालना है। तो जैसा कि पिछले दोनों क्वेश्चन में मैंने बताया कि पहले 1 केजी का दाम निकालेंगे। 2 केजी का दाम अगर 100 है तो 1 केजी का 50 हो जाएगा। और रिड्यूस प्राइस निकालना हो तो कुछ करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू जो कि 50 आया उसका यूज़ करते हैं, और ये जो दिया हुआ है 20 इसका यूज़ करते हैं अपॉन 100, इसको सॉल्व कर देते हैं। ₹10 आ गया, यही आंसर है। तो इसे सॉल्व करने में केवल 1 सेकेंड या 2 सेकेंड लगेंगे आपको, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसे निकालने के लिए पेन एंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन, इसमें आपको रिड्यूस्ड प्राइस नहीं निकालना है जबकि ओरिजिनल प्राइस निकालना है, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ शॉर्टकट, लेकिन देखिए मैं फिर बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, वो 1 केजी का दाम निकालना होता है। तो 6 केजी का दाम यहाँ 240 दिया हुआ है, तो 1 केजी का 240 अपॉन 6 दैट इज़ 40। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना ही होता है, ये कंपलसरी है। तो रिड्यूस्ड प्राइस 40 इंटू अगेन ये 20, इसी 20 का हम यूज़ करते हैं रिड्यूस प्राइस निकालने के लिए इसे। तो इतना करने के बाद 8 पर केजी आया। अब ओरिजिनल प्राइस जब निकालना है तो इसी रिड्यूस प्राइस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये 8 हमने यहाँ लिया, और ये 80 कहाँ से आया, अभी तक आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देखिए। ये 80 एक्चुअली 20% रिडक्शन है। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से 20% रिड्यूस हो जाता है, मीन्स 20% मान लिया चले गए हैं आपके पास से 100 में से, तो कितने बचेंगे 80। तो यही 80 मैंने यहाँ यूज़ किया है। ओके, तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ₹10 पर केजी आएगा, जो कि आपका आंसर है। तो मुश्किल से 3 सेकेंड लगेंगे आपको, 2 से 3 सेकेंड, और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो सीधे यहाँ 3 केजी का दाम 120, 1 केजी का दाम कितना होगा ये ना लिख के मैं सीधे लिखूँगा कि 1 केजी का दाम 120 अपॉन 3 40 होगा। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने को कहा गया है। तो सबसे पहले आपको रिड्यूस प्राइस तो फाइंड करना ही होगा। तो 40 इंटू 20 अपॉन 100। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये 20 मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, तो ये यहाँ से लिख रहा हूँ। तो रिड्यूस प्राइस आ गया, और ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए हमें रिड्यूस प्राइस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये यहाँ मैंने यूज़ किया। और डिवाइड हम किससे करते हैं, जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने के बाद जो बचता है। तो अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर देखिए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और 20% डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो आपके पास कितने बचेंगे 80, राइट। तो यही 80 को मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप 10 रुपीज़ पर केजी आएगा, और ये हमारा आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हाइक से स्टार्ट होते हैं, जो पिछले CGL एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ 10% हाइक हो रहा है, मतलब 10% वृद्धि हो रही है प्राइस में, दाम में। तो अगेन प्रोसेस सेम है। 2 केजी का दाम 110 है, तो 1 केजी का 55 होगा। निकालना क्या है यहाँ, इंक्रीज्ड प्राइस। तो इंक्रीज प्राइस निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ, यहाँ फिर से रिड्यूस्ड प्राइस ना होके यहाँ होगा इंक्रीज प्राइस, सॉरी फॉर दैट। तो ये 55 जो कि 1 केजी का दाम है उसके हमने लिखा, और ये 10% कहाँ से आया, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, तो ये क्वेश्चन में दिया होता है, उसे हम यूज़ करते हैं। तो ये इंक्रीज प्राइस आ गया 5.5 पर केजी, वेरी सिंपल। अब अगर आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा जाए
तो अगेन 2 kg का दाम 110 है, तो 1 kg का दाम 110 अपॉन 2 जो कि 55 होगा। और ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको इंक्रीज प्राइस निकालना ही होगा इसमें। तो अगेन यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इंक्रीज प्राइस होगा। तो इंक्रीज प्राइस जो कि 1 kg का दाम होता है, और यहाँ जो भी परसेंटेज दिया हो अपॉन 100 करने से हम निकाल लेते हैं इंक्रीज प्राइस। और ओरिजिनल प्राइस के लिए हमें इंक्रीज प्राइस की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो ये इंटू 100 और अपॉन ये 10% हाइक, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और अभी तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देखिए। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और 10% हाइक मीन्स 10% उसमें वृद्धि हो जाती है, आपको कहीं कोई और दे देता है 10%, तो आपके पास लास्ट में कितने बचेंगे? तो 110। तो यही 110 को मैंने यहाँ लिखा है। तो इसे जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 पर kg आएगा। तो ये हमारा ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, ये शॉर्टकट का। अंत में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि पिछले CGL एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, मैं चाहूँगा कि इसे आप सॉल्व करें और कोशिश करें कि बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व कर पाएँ। मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग बिना पेन एंड पेपर का यूज़ किए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और काफ़ी टाइम इससे आपका सेव होगा ओरिजिनल CGL एग्ज़ाम में। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो ये रहे उनके आंसर्स। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ मदद मिल रही है और हम और वीडियोस बनाएं डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करें, तो आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, उन्हें शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमारे अपडेट्स नहीं मिलेंगे और आप इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स को मिस करेंगे। तो धन्यवाद। आपका